हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरल इंग्लिश एट साखार इंस्टीट्यूट। मैं जब भी तुमसे मिलती हूँ मुझे तुम्हारी मम्मी की याद आ जाती है। मैं जब भी तुम्हारे हाथ का खाना खाती हूँ मुझे आंटी के हाथ का खाना याद आ जाता है। मैं जब भी उस रोड से गुजरती हूँ मुझे अपने स्कूल डेज याद आ जाते हैं। जब भी, अ वेरी कॉमनली यूज्ड वर्ड both in Hindi as well as English. So, how do we say all these sentences in English? How do we say them? Whenever. Whenever I see you, I get reminded of your mother. Whenever I pass that road or whenever I cross that road, I get reminded of my school days. Fine. Whenever I see him talking, I feel as if I'm talking to his mother. Fine. So whenever मतलब जब भी मैं उससे मिलती हूँ, whenever I see him, जब भी मैं उसको देखती हूँ, whenever I see him or her, fine. जब भी मैं उससे बात करती हूँ, whenever I talk to him, I feel he is very busy. मैं जब भी उससे बात करती हूँ लगता है वो बहुत busy है. Whenever I talk to him, I feel he's always in a hurry. मैं जब भी उससे बात करती हूँ ऐसा लगता है वो हमेशा ही जल्दी में है. Clear? Whenever he comes here, he doesn't stay much longer. वो जब भी यहाँ आता है ज़्यादा देर नहीं रुकता. Whenever he talks to me on phone, he tells me everything about his school. जब भी वो मुझसे फ़ोन पर बात करता है वो मुझसे अपने स्कूल की सारी बातें शेयर करता है. Whenever I meet him in the office canteen, we usually go out for a coffee. हम जब भी ऑफिस कैंटीन में मिलते हैं तो हम बाहर कॉफ़ी के लिए जाते हैं. So whenever I see him, whenever I meet him, whenever I think of him, whenever I talk to him, whenever I receive his call, clear? Whenever I receive his call, I go out of the house because we usually talk for very long. Clear? जब भी उसका फ़ोन आता है तो मैं अक्सर घर के बाहर चला जाता हूँ क्योंकि हम यूजुअली काफ़ी लंबी बातें करते हैं. Fine. Whenever I go to his house, I feel his wife, doesn't feel much comfortable. Fine. मैं जब भी उसके घर जाता हूँ तो मुझे उसको लगता है कि उसकी वाइफ ज़्यादा comfortable feel नहीं करती है. Clear? Whenever is also used in other senses when you say, अरे जब भी तुम्हारा मन हो आ जाना. Clear? You can come whenever you want. You can just drop in whenever you feel like. आपका जब भी मन करे आप आ जाओ बस एक बार. Fine. You can call me whenever you are free. Or you can call me whenever you want. Clear? आप मुझे जब भी चाहो कॉल कर सकते हो. Fine. So whenever is basically used when जब भी हमें ये बात करना है, like जब भी हमें ये बात करना है, whenever. Clear? So whenever you want to talk, जब भी you will use whenever. What is this? So whenever. So let's take up some few more examples with whenever. Whenever I write an essay, I usually don't understand how to finish it. मैं जब भी essay लिखती हूँ मुझे समझ में नहीं आता मैं उसको कैसे finish करूँ. Fine. Whenever he starts talking, he doesn't allow anybody else to speak him. जब भी वो बात करना शुरू करता है वो किसी और को बोलने भी नहीं देता है. Whenever she goes on stage, she is the loudest person there. वो जब भी स्टेज पर जाती है वो सबसे लाउडेस्ट होती है वहाँ पर. Whenever the principal comes on stage, we start feeling bored. जब भी प्रिंसिपल स्टेज पर आती है हम बोर होना शुरू हो जाते हैं. Fine. Whenever there is a holiday, we usually meet and go out somewhere. जब भी छुट्टी होती है तो हम मिलते हैं और बाहर कहीं जाते हैं. Suppose you're talking about some office colleagues or your like neighborhood friends and all. Clear? So whenever you feel like watching something more interesting facts or whenever you want to learn something more good and knowledgeable about English, you can always switch on to Sakhar Institute channel. Fine. So that's all for today. That's all for this video. I hope the video is useful for you. I'm sure it is. Fine. So whenever you want, you can just switch on to the channel and don't forget to like, share and subscribe. Bye-bye.